हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ क्वांटम मैन। वेलकम बैक एट योर सर्विस। सो दोस्तों, now lots of speculations and lots of imaginations, theories of the reality is going on around. So, and Corona is the second wave is really making a mess around the globe, specifically in India and here in the center of the India. So, my questions today, I'm going to ask you questions that to introspect. What this world is about? Is it a world of hooks and crooks? The world full of war, revenge, and politics. And because of that, only Corona evolved. Okay, so or the world which is modern, which uses guns and missiles, like this one. Well, or you see the world which is musical, beautiful, and you just needs to blow the air and it will blow a beautiful music. Well, तो दोस्तों, let's walk. So there are peoples now. Peoples are saying the corona doesn't exist. What exists is a politics around the globe. What do you think? Is it a politics? And the other people, other group of people, they says that it is a conspiracy theory, conspiracy by China, Chinese occupation. As usual, their expansion theory. So, what you think? What is this all about? Now let's first the most important aspect of the corona biological uh, crisis. Let's introspect about it. I'm once again I want to clear this here about that I'm not going to tell you the facts and figures or the general knowledge. I'm not there. I'm not my expertise is not related to the facts and figures and what's going on the news and breaking news. My concern, my expertise, field of expertise is what we, what our projection regard to the world, what we think. That is our perspective. What should be our perspective? Whether to see the world through the glasses of war and politics, or through the fear and conspiracy, or to see the world through the eyes or the glasses of beauty and the the grandeur of life. So, what should be our perspective and what is the truth of this reality? Is it an illusion, or it is just a world drama and we are playing a role of we are we are playing our roles? So accordingly, we seize the world and we project our thoughts and thinkings and we do our actions accordingly. So anyway, so I'm going to ask one question now. Corona, you think many people I have seen that Corona is a conspiracy and it is a politics. Okay, it is a politics or the conspiracy. But on the other hand, you must not forget about the the effects, the people are dying, and there are hospitals not available even for the uh, even for the old patients, and people are dying because of the corona. Many people are saying that uh, this corona is actually doesn't exist. So I want to ask those people that if corona doesn't exist and it is a politics, then why people are dying? Why people are dying?
if the RT-PCR tests are they are showing the false positive reports, diagnoses, then why people are getting fever and they are getting the respiratory attack, lack of oxygen? So these all theories should be a childish theories. That is, it is a war and politics. Okay, even if it is politics, but it's not completely politics, because it is corona is real and it's showing the problem. Peoples are dying and peoples are, they are feeling. Even it is false positive. Even it is a false positive. You are saying, but फिर भी ये कहीं ना कहीं ये it is a real factuals, and people are dying and people are getting corona and they are even people are dying, some are recovered. तो मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से फ़ोन किया, दोस्तों को फ़ोन किया जो कोरोना से पॉजिटिव हुए, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया कि क्या होता है, कितना दर्द होता है बॉडी में, कितना पेन होता है। और ये कोरोना कोई फालसी नहीं है, इट्स नॉट अ फालसी, इट्स रियल प्रैक्टिकल इन ऑन अ ग्राउंड रियलिटी। सो जिन्हें नहीं हुआ है अभी तक, वो लोग सोच रहे कि इट इज़ अ वॉर एंड इट इज़ अ पॉलिटिक्स। सो मैं यहाँ अपनी अपनी तरफ से क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि दिस वर्ल्ड इज़ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। यस, कोरोना कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं देर आर कंस्पेरेसी थेरी एग्जिस्ट, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कंस्पेरेसी थेरी। अभी अगर हम बात करते हैं कि China has created this and we don't have enough evidences, then why people are not raging, or some other powerful countries are not raging, they are not raging war against the Chinese occupation, because there are not enough evidences. But yes, few investigating agency, their spying agency, they are 24/7, they are working to collect the evidences. As far as the Mossad, Israel's Mossad agency is concerned, or RAW agencies India's RAW agency is concerned, or the agency, the spy agency of USA is concerned. They are doing their job 24/7, but they are not getting enough evidence to wage war against the China's. So, but कहीं ना कहीं चाइना की intentions expansionist, communist, always against the capitalism. So there are some. I'm not saying that this is only the truth, but there are percent of truth becomes a reality. Like yes, अगर हम कहें कि this is a war and this is war, or this is a somewhere it is a war started as a World War III, we can say it is through the cyber war and through the using the biological weapon. This is kind of second missile. Second wave of corona is second missile. तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं दो चीज़ों पे यहाँ पे आज बोलना चाह रहा हूँ। पहला तो ये है कि कोरोना सही में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ ऑल अप टू योर पर्सपेक्टिव। जब तक तुम्हें कोरोना नहीं हुआ है और तुमने फीवर और पेन को नहीं सहा है या झेला है, तब तक तुम यही कहते रहोगे कि इट इज़ अ पॉलिटिक्स and there is no benefit of lockdown. Lockdown is useless. Yeah, somewhere it is useless, somewhere it is important. And now the other part that people are rumoring around, that vaccination, because of vaccination many people are dying because of vaccination is not good, it won't work. Yes, it won't work. Some way, in some other cases, some rare cases it won't work. Some cases people are dying after the vaccination, but there are some reasons. See, the reality is not a one thing. It is composition of each and every aspects of the existence, or the we can say that all the factors should be considered. Okay, जब पोलियो वैक्सीन शुरुआत में जब बनी थी और वो जो दी गई थी पूरे वर्ल्ड में, there are many fatalities being reported that time. काफ़ी लोग मरे थे शुरुआत में. सम कंट्रीज़ हैव बैंड द पोलियो वैक्सीन, बट इसका मतलब ये नहीं कि पोलियो वैक्सीन पूरी तरह से बुरी थी या गलत थी इंसानियत के लिए, फॉर द होल मैनकाइंड. तो ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी फैक्ट्स का कई पहलू होते हैं. कभी कभी वो असर करती है, कभी कभी वो फैटल होती है.
तो कभी कभी वो साइड इफ़ेक्ट्स देती है और कभी कभी वो काम नहीं करती, बट कभी कभी वो काम करती है। तो हमने देखा कि शुरुआत में जब पोलियो वैक्सीन आई थी, तब तब काफ़ी लोगों को उससे उससे फ़ायदा हुआ। काफ़ी कंट्रीज़ हैव दे हैव वाइप्ड आउट देयर होल पोलियो from throughout their country. Even India also is now polio free because of that vaccine. Yes, initially many people have to sacrifice because हमें एक्सपीरियंस आता है वैक्सीनेशन का, धीरे 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 हर सबको वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस आता है। तो उस हिसाब से उन चीज़ों को अडाप्ट किया जाता है, इवॉल्व किया जाता है। ओके, सो नाउ कम टू दी कमिंग बैक टू दिस कोरोना वैक्सीन। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है इट इज़ नॉट गुड, पीपल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग मर भी सकते हैं इससे, कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, दे कैन ईजीली कोप अप विद दीज फीवर पोस्ट वैक्सीनेशन, and those who are having already existing illnesses, their immunity is already compromised, and they are now getting the vaccination without being told to the vaccination uh, that the pathologist or the doctor. You should tell your doctor that you have existing diseases, so accordingly they will consult you or guide you. But अगर आपके पास आपके एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, ऑलरेडी योर इम्यूनिटी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड यू आर टेकिंग अ वैक्सीनेशन, ऑफ कोर्स पीपल में डाई। ओके, सो ये पहला सच। दूसरा सच कि हाँ, वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है आपको कोरोना पॉजिटिव हो। बिकॉज देखो, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन जो है उसे काम करने के लिए, एंटीबॉडीज़ डेवलप होने के लिए आपको 1.5 महीना लगेगा। दूसरा डोज आप जब तक लोगे, 1 महीने बाद जब दूसरा डोज लोगे, और उसके बाद में भी और 15 दिन आप पकड़ लो, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस, इवन मोर देन नॉर्मल रूटीन आफ्टर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको ज़्यादा कॉशियस रहना है, 1.5 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। बिकॉज एक वैक्सीनेशन लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इम्यूनिटी स्टार्टेड वर्किंग, दे आर ऑलरेडी ऑन वर्क टू डेवलप टू एवॉल्व विद द एंटीबॉडीज़। तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है और तब उस समय आपको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। सो फर्स्ट डोज के वैक्सीनेशन के बाद आपको कोरोना हो सकता है। इसलिए तब तक 1.5 महीने तक, जब तक आपका सेकेंड डोज के बाद भी 15 दिन के बाद भी, जब तक पूरी एंटीबॉडीज़ मेमोरी जो सेल मेमोरीज़ है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू नहीं करती, तब तक आपको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए ये रूमर फैल रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। ओके, तो ये पहला फैक्ट। और दूसरी चीज़, अब लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग दैट चाइनीज़ हैज़ रेज्ड देयर टैक्टिकल वॉर, biological, using the biological weapon without showing very cold bloodedly, and without you know without showing any evidences. But ऐसा कोई भी क्राइम नहीं होता जो बिना एविडेंस के हो। These space and these completely all the existence, they always keep the memory of whatever happens, whatever simple small micro events, even if it is happening, it keeps the record of each and every second and fractions. So obviously, agar Chinese has done a conspiracy, uh, then yes, sooner or later we will have the evidence. Okay, so yes, कुछ परसेंट जो कम्युनिज्म और जो एक्सपांशनिज्म की जो इंटेंशंस है, उसमें कहीं ना कहीं वुहान और उसके बस उसी के बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ही नज़दीक एक वेट मार्केट है। यानी वेट मार्केट का होना और लेबॉर्ट्री का होना, ये दोनों चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। सो मेरा मानना भी यही है कि इंटेंशंस कभी कभी काम करते हैं। आप चाइना के इंटेंशंस जो है वो एक्सपांशनिज्म और अगेंस्ट कैपिटलिज्म वर्क करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट इंटेंशन उन्होंने दे हैव गैदर्ड द वेट मार्केट देयर, दे लेट द वेट मार्केट सेटल देयर, एंड दे हैव their laboratory there where they work on the viruses. So even if it is a coincidence, but their intentions are true and they are not good for the other countries like US and India and the Europe. But now these the so yeah,
the spying agency of the bigger countries, they are working on uh, uh, to collect the evidences. बट नाउ व्हाट इज़ व्हाट एक कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव अभी क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो भी है, चाइना ने इसको बनाया नहीं बनाया, जो दैट्स अनदर मैटर, समय के साथ वो ऊपर आएगा, दूध का दूध पानी का पानी, और वी विल द होल वर्ल्ड विल कम टू नो ऑन देयर टाइम, ऑन देयर जब समय आएगा तो हमें पता चलेगा ही चलेगा. ओके, सो अभी हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड ज़ीरो पे क्या चल रहा है कि द पीपल्स आर नॉट गेटिंग द इनफ बेड इन द हॉस्पिटल because of population, the ratio of the population and the beds available in the India are negligible. So yes, of course, the whole hospitals are occupied and some are denying they don't have beds. So that means the corona is spreading like a wildfire, and people are really getting the fever, and they are dying literally because of the respiratory failure, because the virus, when they enter through the throat to the lungs, and they create as a defense mechanism, bodies, the lungs secrete mucus, and that mucus getting viscous into the lungs, and you are not able to breathe properly, and you may die because of the respiratory failure, because you can't breathe. So that's the ground reality. Yes, corona exists, and because of the vaccination, many people get positive. Many people are, not many, few people are dying, and few are getting benefits. So those whose immunity is strong, they are doing regular exercise. They are, at least they can run. They are running in the field or the space. If they are good space like this, they are having not crowded places, then their people are really coping well with the corona. Like me, I have this environment, I fondly call it Quantum Valley, and we have this farmhouse here. You can see the farmhouse. So this is the farmhouse we have, and we have already quarantined ourselves in this field, and we have fresh air, and we just roam in the morning. We run. I do some martial arts, some yogas, some flips and flops. So this is, one should, a common man should follow this routine, and they should believe, and they should change the perspective. The world is still beautiful, and there are darker side of the vaccination. There are good lighter side of also of the vaccination. So it is up to you. You have to be, you have to ask yourself. तुम्हें खुद को पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लिए हूँ, मेरी इम्यूनिटी सही है या नहीं है, ये तुम्हें पता है. यू यू आर द पर्सन, you better know you about yourself in the whole world than any doctor or any expert. So you are the expert of your own. So you have to decide whether you have to take vaccine or not, or you can, whether you can cope up with the vaccination or not. Okay. So अब मेरा पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव जो मैंने बोला यही है. तो सबसे पहले तो यस, दिस इज़ द चाइनीज़ इंटेंशंस. Even if they have not created the virus, but they have, their intentions is not good, and that's why they are intentionally, subconsciously, they have wet market and the laboratory they have in the same city, and that's why the virus got easily pop out from the laboratory and went to the wet market and then spread across the world. This is but China won't say that they have created it, obviously. They won't say it officially because it's gonna be a mess. The World War III may start. So cyber war and the biological war is the next weapons of these World War III, and it, as my perspective is, it is already been started. So now common man को, मेरे जैसे common man को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को क्वांटम बनाने के लिए? So you must have a good space, or if even if you don't have the space, even if you have some village land in the villages, even if you have good land in the villages, go to your farmhouse, or just go to the some spatial spaces, जहाँ पे space है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रहिए, और then you will be safe. And if you wants to vaccinate, just go to the vaccination without any fear, but you have to ask yourself only. Okay. So this video have been ये वीडियो बनाने के लिए, मैंने बनाने का मकसद यही था
कि आपको मैं क्या रियलाइज़ करता हूँ, आप क्या रियलाइज़ करते हो. लेट्स शेयर इट आउट. Have to speak. We have to speak because I am a health professional. So it's my duty. It's my dharma to uh, to to speak what I can, what I am expert in. So that is my perspective. So हर चीज़ के कई पहलू होते हैं, उनको ध्यान में रखिए. खुद से पूछिए कि मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ. अगर नहीं, आप लेना नहीं चाहते, आप डाउटफुल हो, तो मत लीजिए. Okay, so it is not completely a politics, or not a completely it's a percent of politics, and percent of natural disaster, percent of politics, because communist party has already, they have the Chinese occupation, their intentions are expansionism and against, always against the capitalism. So they have intended, and that's why it just point by point it happened. So सो दोस्तों, वैक्सीनेशन, अगर आपने आप से पूछ के वैक्सीनेशन, अपने आप को पूछो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि वैक्सीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. मैं अगर वैक्सीन नहीं भी लेता हूँ तो माई इम्यूनिटी इज़ आयरन इम्यूनिटी, बिकॉज आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट, आई एम योगा प्रैक्टिशनर, आई जस्ट रन, आई रोम इन द फील्ड, आई वर्क सम लेबर वर्क आई ऑल्सो डू. अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं ज़मीन में गड्ढे करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, और so do some good exercise, have some good fresh diet, raw vegetables, and you will definitely will have a good immunity. Even if corona happens to you, you will be safe. Your immunity will challenge the corona, and you may develop antibodies. So दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो गया है, एक 20 मिनट के ऊपर हो गया है, बट ओके. मेरे दो पर्सपेक्टिव मुझे बताना था, जो मैंने बताया यहाँ पे. तो यही है सच्चाई, यही रियलिटी है. बिकॉज यू डोंट नीड टू रीड एनी बुक्स और वॉच मोर न्यूज़ चैनल. देयर आर ऑलरेडी ऑलवेज स्पेकुलेशंस. अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है उसके हिसाब से काम करना होता है, उसके हिसाब से हमको प्रोजेक्ट करना होता है. सो तो कोई बोल रहा है कि वैक्सीनेशन से मर गया है, तो डोंट लिसन टू इट. यू आस्क यूर सेल्फ वेदर यू कैन कोप अप विद द वैक्सीनेशन और नॉट. और एंड अगर वो लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स ही है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही, 100% पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स ही है, और लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं. लॉकडाउन का मतलब है भी और नहीं भी, बट हमको फ्लेक्सिबल रहना होगा. लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन करना ज़रूरी भी है और नहीं भी. तो ये ऑल इट डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम, इट चेंजेस. कभी लॉकडाउन हटता है, कभी आता है, कभी फुल लॉकडाउन, कभी हाफ लॉकडाउन. सो इट इज़ ऑल गुड डिसीजंस आर एक्चुअली टेकन बाय द गवर्नमेंट. पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में होती है, एवरीथिंग इज़ पॉलिटिक्स. आई एम वॉकिंग, दिस द बर्ड्स आर चिरपिंग हियर, इट्स ऑल पॉलिटिक्स. But not the 100% everything is politics, because nature has its own ways to teach mankind uh, how to live your life, how to survive. एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है because of the corona. Yes, there are darker side because of many people are dying, the population getting reduced. It's like a nature's way. अगर एक साइड से सोचा जाए कि it's a nature's way to to reduce the population and evolve with the natural things, because the जंगल सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं अभी. हर जगह पे खेती या फिर बंजर ज़मीन दिखती है. द लैंड एंड डेवलपर्स, दे आर गाइज आर डूइंग बिजनेस आउट ऑफ द लैंड्स ओनली, एंड सारे जंगल तोड़ के वो बंजर धरती बना के उसमें केवल वो कई साल तक वैसे ही पड़ी रहती है. So that's why nature has their own way to teach mankind. Even if it is somewhere it is nature's way, somewhere it is some part it is a politics, some part it is. So it is all our perspective, time by time, on which time what we think. तो दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी पे वैक्सीनेशन आपको पूछना है खुद से. Yes, many people are dying, few peoples are dying, few peoples got positive after the vaccination, but you have to take decide. And बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हुआ है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, and they are now they are immune to the vaccine, to the corona, second mutant of corona. And let's pray and let's do some action, speak out if you have good knowledge, if you have good wisdom. So, and let us not talk about the facts and figures and statistics. Let's talk about what we project
to the world about the corona and the vaccination and the conspiracy theory of the China, uh, or this is the World War III or not. Yes, somewhere it is a World War III, somewhere it is the nature's way, and somewhere it is politics, and somewhere people are dying because of the vaccination and because of the corona. So thinking only this is the corona is an illusion, is not a reality. कोरोना समवेयर इट इज़, यस इट इज़ इल्यूजन, इट इज़ अप टू योर पर्सपेक्टिव. सारा माइंड का खेल है, सारा मन का खेल है. तो मन से हम क्या देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है. अगर आप सोचोगे कि ये दुनिया, दिस कोरोना इज़ इल्यूजन and this is created by the politicians for their self motives, then yes it is. And if you see this is the nature's calamity, a natural disaster, yes it is. And if you see this is the war, this is the politics, the world politics, and the World War III has been already been started by the Chinese occupation, then yes it is. It is all together makes the reality. It is up to you what you project to the world. So change your perspective. If you see the beauty in the world, you will see the beauty. नाउ बिकॉज ऑफ द कोरोना का एक लाइटर साइड ये है कि नेचर ने अपने आप को रिगेन किया, रिवाइव किया है, रीजनरेट किया है. एंड और जो लोग मरे हैं, मैं उनके प्रति काफ़ी आई एम पेइंग माई कंडोलेंस टू देम. And they have died, but one reality you should understand, that no one dies actually. But yes, the egos related to the relationship, they always die. And that's why man suffers a lot because of that, because he do not know the wisdom of the soul, of the consciousness. They only think that this is my body and this is me. But you have to understand the spiritual aspect of life, the art of living, art of art of seeing the world, is that you are not your body. Remember, why I'm calling myself always a quantum man is because I, I, I realized, because of my deep wisdom and deep meditation, I transcended myself, that we are not just a body. We are not just the mind or the thoughts or the thinking process. We are more than that. Because of that, even the body cannot work. Even that, and because of that, even mind cannot work. Mind cannot think. So I see the world because of the eyes, because of my consciousness, because of my soul. I listen to the world, not because of my ear. Ears are machines, they are instruments of the body and the mind. So you are not your body. So people are dying, but they are dying there. Where are they going? They're going nowhere. They are coming back again in another different forms. So you have to let go the ego of relationship, because nature never consider the egoistic relationship. So have compassionate in your heart and think every existing every animal and plants as your part. This is what I call the quantum lifestyle. Every existence is yours. You are the existence. You are not your body, you are not your mind. You are consciousness across, pervading all the space and time. Every being, everything, that is the consciousness. And in this ocean of whole consciousness, you are having just a small consciousness, and that's why you are considering this is you. This hand belongs to me, these eyes belongs to me, but this is not me. This body belongs to me, this mind belongs to me, this intellect belongs to me, but this is not me. So वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, एंड दैट इज़ ऑल टुडे. दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. एंड टेक केयर दोस्तों. बाय. I will see you back again. Live your life in a quantum way. This is the way one common man should live. Bye bye. Take care. All the best.